You thought I'm in that place where you want me to be, but I don't want you back. So it's easy to see when I'm high all the time. 'Cause I have lost you, get the thinking why we used to be so high on life. Without you, I don't feel alive. So I just keep on being high, high, higher than the sky. Tell me are you there for me even when I try. Keep on being high. Without you, keep on being high. Without you, keep on being high. I know that you're feeling forsaken, mistaken, wish you were another man. I remember feeling awakened, mistaken, if you thought I'm in that place where you want me to be, but I don't want you back. So it's easy to see when I'm high all the time. 'Cause I have lost you, get the thinking why we used to be so high on life. Without you, I don't feel alive. So I just keep on being high, high, higher than the sky. Tell me are you there for me even when I try. Keep on being high. Without you, keep on being high. Without you, keep on being high. There's a pyramid of power with eyes that can see it all. Cameras to catch you. I'm vibing to the music. I hope you are too, because damn, that music is good, man. I've got myself the playlist, so you should definitely hit me up if you want yourself one. But enough of the rambling, enough of the music. Let's get on with what we are here for, which is the Valorant Conqueror Championship aftermath. This is a chill chat with some of the best players that have qualified to the finals. And today we've got some players from the defending champions themselves, Global Esports, as well as Exploit Storm coming in today. So we've got Skillz, Lightningfast, HSB, and Shooters. So with no further ado, let's head on over to them. Hey guys, how you doing? Hello. Hey, Hello. Yo, what's up? How you doing, Lightningfast? How you doing, Skills? Great, great, great. Skills all good? तेरा माइक म्यूट है शायद. All right. Okay, that was sad, but yeah, अच्छा लग रहा है अभी. Nice. It's a traditional ritual sacrifice, हम लोग कास्ट करते समय भी बोलते हैं अगर गेम हाँ. के स्टार्ट पे टेक ब्रेक होता है या टेक इशू होता है तो गेम फ्लॉलेसली जाएगा, नहीं तो गेम के बीच में होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है. सो टू द टेक ब्रेक गॉड्स लो हो गया, अब स्ट्रीम बराबर जाए होपफुली. But hey, I'll start off with you, Shooter. You've been on an insane run of form so far, and आपके लिए coming from yeah. VCC1 into VCC2 काफी responsibilities बढ़ गई है because Thorax had left, so you're playing Jet permanently now, you're playing that op permanently now. So how does that feel, that extra responsibility? आपको help कर रहा है, आपको थोड़ा और pressure ला रहा है, कैसे लग रहा है? प्रेशर तो होता है हर गेम में, लेकिन आ, मेरी टीम इतना हेल्प करती है तो वो प्रेशर थोड़ा कम होता रहता है, क्योंकि जो भी मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ टीम की सपोर्ट की वजह से करता हूँ. जितना अच्छा टीम सपोर्ट करती है उतना अच्छा मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ पूरे गेम में. Wow, you put it so simply, man. But honestly, आपके performance देखने के बाद इतना simple नहीं लगता है. But HSB, on to you. Same idea, like VCC 1 से 2 आप एक छोटा सा roster change हुआ, but काफी बड़ा impact शायद roster पे ही. You itself had to step up, be much more of a leader. Soulmate as well, I know जो आपके बाजू में बैठे, he also had to do the exact same thing. So I want to ask you together, आप लोग of course बहुत जिगरी दोस्त हैं, मुझे ये पता है, तो साथ में आपने ये journey कैसी ली है? How has it been?
तो जर्नी काफी टफ थी, मगर जो मेरे साथ बंदा बैठा है, आई वुड नेवर लेट हिम लीड इन माय लाइफ क्योंकि ये बंदा जो है ये बहुत ज्यादा मतलब वैशी हो जाता है, ये तो लड़ने मारने पे आ जाता है अगर उसको आईसीएल दे दी और ये गलती कर दी टीम ने तो आई थिंक द एनवायरनमेंट ऑफ द टीम इज वेरी नाइस, वी आर ऑल फ्रेंड्स, इट्स ऑल नाइस, ऑल गुड। मगर शूटर, आई थिंक शूटर को काफी ज्यादा हम लोगों ने जब स्टोरेक्स के जाने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई शूटर को जो है ना हमने कम्प्लीटली डुअलिस्ट रोल पे देना है, क्योंकि पहले वीसीसी 1 में साय हमारी बात भी हुई थी कि क्या कहते हैं हमारी टीम में काफी रोल शफलिंग होती है, समटाइम्स आई विल बी द कंट्रोलर, समटाइम्स आई विल बी द इनिशिएटर, कभी शूटर इनिशिएटर पे, कभी डुअलिस्ट पे। तो वीसीसी 1 के बाद हम लोगों ने जब देखा कि शूटर की फुल जो पोटेंशियल है वो डुअलिस्ट पे है, तो हमने इसको परमानेंट डुअलिस्ट, हमने इसको बोला शूटर तुम डुअलिस्ट खेलना है अब तुम्हें परमानेंटली ना। तो आई थिंक वहां से काफी टर्न ऑफ इवेंट्स था कुछ प्लेयर्स के लिए, जैसे जिनमें से शूटर इंक्लूडेड था, फिर किंग भी था। तो काफी प्लेयर्स को अब कंफर्ट लेवल पे लेकर आ रहे हैं हम लोग अपने, कि सब अपने अपने रोल्स पे आए, फिट इन हो, और हम उस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। It's really nice. I think वो level of stability जरूर आपके squad में already दिख रही है VCC 1 compared to VCC 2 पे. But talking about VCC 1 so much, of course, I can't ignore the defending champions for too long. So I'll head on over to you, Skillz. Instantly, Yeah. smile comes on your face. So I just want to ask you that, like coming into this tournament, being Hmm. that defending champion, how did that feel? Uh, Pretty much normal, like this tournament, the second VCC is going to be obviously very hard क्योंकि अब सारे टीम जान गई है कैसे खेलना चाहिए गेम, like everyone's a good team right now. In the grand finals all four teams can win, so it's going to be very hard. So अगर लास्ट वाला जीत गया तो क्या हो गया, ये वाला पे फोकस करना है और खेलना है बस. The mindset is straight, that's all, nothing much. Yes, very well said. Talking about mindset, lightning fast. I think one of the most like comms के सो रहा है videos थोड़ा. I've been seeing you recently, and I know that you're one of the more explosive players, not just in the game but also in terms of voices in the team. So up and down has been a lot of the case in this tournament. You had to go through Q1, Q2, wildcard. How is it feeling now? What did Hellranger tell you? I think it was Hellranger's voice. I mean, ऐसा Q1 Q2 वाइल्ड कार्ड सब खेलना पड़ा अभी ये VCC सीजन 2 में हम ये सीखे कि बाकी लोग भी ऐसा बहुत टीम्स आ गए जिनको खेलना आता है, सो वी हैव लर्नड इट द हार्ड वे हार के. तो दैट्स लाइक कैसे बताओ, इट्स लाइक टू वेज ऑफ सेइंग इट कि वन थिंग कि हम लोग को और वर्क पुट इन करना चाहिए, और सेकंड थिंग इज दैट वी कैन नॉट take any team lightly. So that's वही है कि keeping our confidence up is the most important thing in VCC season 2. I think एक अगर strong mentality के साथ approach करते हैं game को तो keeping everyone's comms up, confidence up, shooting on point, ऐसा कुछ सब कुछ सही है तो I think it's all good. But कुछ one strong step and it's all gone ऐसा, तो अभी feeling ऐसा है. But you guys have been through this, nah? Even in VCC 1, it was just you like lost to VLT a few times. Still, the last chance you had, Yeah, basically. but That's we when you won took the lead. we won the Q2, so Huh, Hmm. true. मैं यही Yeah, अच्छा सोच था, so रहा था पर कि इस बार तो वाइल्ड. हाँ so बोलो two में आसिफ. one more step मैं ये कह extra. रहा था कि when you see global coming back, you know shit's going down, मतलब global Oh, जब कमबैक मारती है तो फिर 9-3 भी नहीं देखती, तो ah, that's what I was हाँ thinking. 9-3. तो कमबैक तो है. that number has been stuck in everyone's minds. But नंबर्स की बात करी जाए तो HSB आपको ही पूछता हूँ. आई थिंक कंपेयर टू VCC 1 आपने बोला भी ये रोल चेंज जो आपने लाया है, इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग द रोस्टर सॉर्ट ऑफ गेट इनटू देयर बिगेस्ट बेस्ट पोटेंशियल. बट ओवरऑल लाइक मैं गेम प्ले में भी नोटिस कर रहा हूँ आपके नए कोच आने के बाद भी, सेक्सी आने के बाद ऐसा लग रहा है द टीम हैज बिकम अ लॉट मोर सिस्टमैटिक. इज दैट द केस और इज दैट जस्ट नहीं, ये है because we were very heavily reliant on individual plays before, but now we are working as a system, as a team. और आई थिंक टीम का एनवायरनमेंट भी सेक्सी के आने के बाद काफी बेहतर हुआ है. तो सेक्सी इज नॉट जस्ट अ कोच, मतलब वो ही इज अ मल्टी टैलेंटेड गाय, वी कॉल हिम जॉनी सिंस ऑफ आवर टीम. ही इज MMA फाइटर, ही इज oh अ प्रोफेशनल शेफ,
and he's a professional Valorant coach. He's a professional motivational speaker, so he's all in one. So I think he Okay, helps a wow. lot, even inside of the game, outside of the game as well. So he's bringing a lot of help to the team, और काफी ज़्यादा फर्क आ रहा है उसके बाद. या स्पेशली वो मोटिवेशनल स्पीकर पार्ट जो आपने बोला, आई एम श्योर साइकोलॉजिकली लाइक जब टीम थोड़ी डाउन है वो काफी अच्छे पेप टॉक्स देते होंगे शायद. यू नो यू शुड आल्सो स्टार्ट रिलीजिंग सम कॉम्स वीडियोस, हमें भी पता चले एग्जैक्टली कैसे पेप टॉक्स होते हैं, मजा आए. लाइटनिंग फास्ट आजकल जी का बता रहे हैं, आप एक्सपर्ट की तरफ से आप बता दो एचएसवी. But on that note, Shooter, I want to ask you, like, how has it helped you with the recent inclusion of a coach? Like, थोड़ा pressure आपके ऊपर से निकला हुआ है, like, yeah, is it just the same case where you're still feeling that pressure? You're still the primary duelist, the team comp sort of revolves around you. प्राइमरी ड्यूलिस्ट हूँ हाँ, लेकिन कोच ने इंडिविजुअली सब पे है ना वर्क किया है और सबको है ना बताया कि तुम्हारा क्या क्या रोल है, किस तरह से खेलना होता है. तो प्रेशर थोड़ा सा हटा है कोच के आने से, बिल्कुल. और हेल्प कर रहा है टीम को इंडिविजुअली, जो हम पहले रिलाई करते थे. And talking about coaches, skills, I want to get to you. It's been a bit of Yeah. an up and down. You guys tried out a few, it didn't work out. It looked like your playstyle also took a hit for a while with the comms changing. But just in the last game of the wild card, you brought Hmm. back, for example, on Ascent, the breach came back. And I'm Hmm. expecting that trend to continue. So, talk to me about that. Like, about the idea that G at first tried to play meta and it sort of worked, but it didn't really work. And now you seem to be back to the old G way. I mean, starting में जब coaches को try out करते हैं, like we didn't just try out one coach, we tried out at least 3 to 4. So every coach, like सारे coach एक एक point रहता है, उनका एक एक style रहता है. They bring like different comps. So it's their tryout. We're trying out them. So we listen to what they do. So ये सब कुछ करके अलग अलग स्टाइल खेल के अलग अलग कॉम्प खेल के मेटा खेल के we had lost ourselves somewhere. Like कि you know कि अपने स्टाइल में which style suits us more better. So ये सब कुछ जाने के बाद then we told like after VCC we'll play the VCC without coach and after VCC we'll try the coach for again. तो यही था और कुछ नहीं, पर वही था. We our like our mentality had taken a hit at that time, you can say, because of the many different styles we were playing. Yeah, it was very confusing also in game, but now it's all good. Fair enough. I think last question before we proceed to the clips for you, Lightning Fast. A narrative, you know, एक storyline रहता है जो मैं हमेशा casting में mention करता हूँ कि GE fighting literally game में दिखता है. There is never a point where I feel that you can give up on your team क्योंकि like HSB also said earlier कि कहीं ना कहीं से comeback आप लोग निकाल देते हो every single time. So do you have that in the back of your mind that we got this? It doesn't matter what the scoreline is. It doesn't matter that it took us to wild card. What matters is finals coming up. Is that the mentality Yeah, in G as well? yeah. I think that's the mentality of not only our team. It should be the mentality of every team. Just the thing that you should not give up, never give up. So even if against Godp it's like 12-4, we win one round, it's 12-5. We think that it's the score line is not 12-4. What we need to think is what's coming up in the next round. So that's the mentality every team needs to be going ahead with. So yeah, keep never give up, keep trying. There's always a second chance. वही है. कल That's बोला the था मैंने that's the इसको ये. mentality. मगर मगर कुछ टीमें होती नहीं ना ऐसी लाइटनिंग फास्ट. कुछ कत्ल हाँ? करने पे आ जाते हैं एक दूसरे का. I'm talking हाँ about myself. हाँ, आपने Okay. सोलमेट भी बोला कि वो लड़ाई झगड़े पे आ Yeah, जाते I हैं thought लोग. you were talking about इमोशनल soulmate. मेरे को पर्सपेक्टिव लगा रहता soulmate है. के बारे में बात कर रहे. नहीं बेचारा सोलमेट नहीं, बाकी सब भी बहुत हॉट हेडेड है हमारी नहीं टीम नहीं, में. तो हम सारे ऐसी है, पूरी टीम में यही चल रहा होता है. दोस्त है ना बहुत पुराने सारे, तो ये आ जाता है फैक्टर बीच में. I mean, but I'm sure at the same time जब कमबैक शुरू होता है सब एक दूसरे को बढ़ाने लगते हैं, वो हाइप अप कर, एक हाँ. मोमेंटम जैसा आ जाता है, हाइप करने लगता है. एग्जैक्टली तो वो भी नहीं, आई काफी थिंक हेल्प आई करता एग्री विद होगा. लाइटनिंग फास्ट 100% के टीम्स की मेंटालिटी जो है वो टूर्नामेंट में ऐसी होनी चाहिए कि यू शुडंट बी फोकसिंग ऑन द प्रीवियस राउंड. आपको बस हर मतलब इट्स अ स्मॉल स्टेप अहेड. आपको बस एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बनाना है. यू हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट राउंड, उसके बाद अगला राउंड, फिर अगला राउंड. स्मॉल स्टेप्स इन यू आर गोना मेक इट बिग.
Well, inspirational words really from all of you guys for any upcoming team or player. Just even in compy, guys, just focus on your rounds. Though I understand in compy if you tilt your head off, don't worry. But with that, let's get on over to the clips segment. We've got some really cool clips, and more than anything, more than the plays itself, I really want to talk to you about what is going on in the team in the background. So let's have a look with that first clip. I believe shooter ka clip hai ye, if I'm not mistaken. Yes, last round of split. Okay, instantly. Tell me, हंसी किसके बारे में है? ये ऐसी इस बारे में कि दिस वाज द लास्ट तुम राउंड तुम एंड थोड़ा माहौल चिल हो गया था टीम का एवरीवन वाज लाइक बस अब तो गेम आ गया खैर हो गई चिल सीन है तो किंग वाज लाइक मैं जा रहा हूँ ए पेल्ट करने तो किंग इज द फनीएस्ट वन इन आवर टीम हम उसकी बहुत लेते भी हैं और वो छोटा है ना थोड़ा 18 साल का है तो और सब एंड इज उसको बुली फनी करते तो रहते हैं। उसने बुली तो नहीं करते इतना हार्श नहीं हम लोग मगर शूटर बुली करता है उसको खैर तो उसने कहा भाई मैं ए अल्ट कर रहा हूँ तो हमने कहा ठीक है तो एवरीवन इज सेटिंग अप के भाई हाँ शूटर कह रहा है कि आई पुश बिहाइंड यू ये वो ना तो उसने जैसे ही सचल किया और हियर कम्स द पार्टी आई तो वहां से केओ अल्ट ऑन हुई उसका रॉकेट जो है हवा में ऑफ हुआ है और सारे पीछे भाग गए उसको अकेले छोड़ के कि ये अकेला मर जाए तो इट वाज अ फनी मोमेंट उसके बाद शूटर ने 3 के मार दिया साइड में से तो इट वाज फन वो गलती से लग गए थे ब्लाइंड पे, मैं फुल ब्लाइंड था और 2 कोलैटरल लग गए थे। फिर मैं गलती से लगी और डिफेंड डिड यू करते लाइक नो व्हेन यू हैड टू फायर लाइक वो ब्लाइंड के टाइम पे या ऐसे ही तुक्का मार दिया? ब तो हमेशा मेरा तुक्के लगता है, मैं ब्लाइंड हो जाता हूँ, मैं थोड़ा वेट करता हूँ, फिर मैं चला देता हूँ आस-पास, लग जाए नहीं तो ऊपर वाले के नाम। मतलब मेरे ख्याल से तो साउथ एशिया में सारी जेट्स का यही सीन है फ्लैशिंग है सारे मतलब कभी पता नहीं चलता डेथ मेकर कुछ मार देता है रॉफ्यूल कुछ मार देता है रॉसी फिर शूटर मतलब फ्लैश में कोलैटरल लग रहे हैं तो आई थिंक हमारे जेट्स यहाँ पे काफी फ्लैशी हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग जेट्स हैं हमारे पास साउथ एशिया में fair. माइक म्यूट है तेरा। Oh, muted है. म्यूट नहीं था, डीसी हो गया था। आवाज आ रहा है अभी? हाँ. मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट यही है कि स्टन में जब मारते हैं ना, हाँ. दैट्स द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट, द स्टन पार्ट। दिल पे लगते यार हैं। मैं लाइक ब्रीच कैसा में हूँ लगता है? जो जब हाँ, मैं दिल अल्ट पे करके लगते हैं। साइड वो में बात जाता है, हूँ सही बिल्कुल सही बोल रहा है। और मुझे वो स्टन में वन टैप मारता है ना तो फिर मैं पीसी में मारने का दिल चाहता है Oh boy. Lightning fast, what about you? I think you're usually in the opposite situations, like getting stunned and hitting those taps. I remember a clip actually. I don't know if you remember, but Q1 में एक clip है where you get stunned by an Astra concuss and you take two people out before dying. So for all of आई these डोंट guys get रिमेम्बर। वाह भाई ये भी सही वही है मटके मैं मार है ना, तो रिमेम्बर कैसे करोगे? हाँ दुख याद रहता है फटके मारना याद दुख नहीं याद रहता रहता है यार। है बट दुख आपने काफी लोगों को दिया था so actually let's take a look at the next clip because I think you're already expecting what it's going to be. I'm not sure if it's yours or Skillz because we've got one of each, but let's head on over to the next clip and see what we've got. It's Skillz. ओ भाई। हाँ, Okay, yeah, this clutch was nuts. So एम तो है what एम aim, तो but है। like this. So how did you know he was going to push? Because you were running out of time. Like, was that just instant read or? आई डोंट नो, लाइक एट दैट टाइम आई थिंक आई वाज नॉट रनिंग आउट ऑफ टाइम, लाइक मेरे पास टाइम था। हाँ 15 सेकंड थे. या सो लाइक आई थिंक मैं मुझे मर जाना चाहिए था जब मैं रिकॉन में स्कैन हो रहा था उधर ही। आई थॉट आई वाज डेड, बट आई डिडंट वांट टू गिव टाइम टू द एनिमीज, तो पोजीशन नहीं देना था। तो आगे गया, सो एज सून एज लाइक आई जंप डाउन टू लॉक्स, I saw that lane is clear, so you can just say it's their expectation that you might be expecting, since I'm low, since they fired like they might push you, so उधर ही aim लेके था। जब किलजो आया तो I knew that Astra also will be with him, so Hmm. that's a तो ये normal तो बड़ा clutch play I इम्पॉसिबल think। राउंड था फिर टीम का रिएक्शन क्या था इस पे Exactly. ओ Lightning fast. भाई, You tell us. मैं तो शॉक हो गया था भाई, ऐसा अरे 28 वो एचपी भाई में ये तो दिमाग लगा लिया भाई अपना। जितना एम है उतना से उससे ज्यादा दिमाग लगा लिया वो होल्ड करके एक्स्ट्रा को जब मारा था भाई। सही Yeah, था। exactly. Like, क्योंकि I can चिल्लाया imagine सब, अगर नाइस 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 बोला। वैसे वैसे अपने टीम में बहुत क्लच करते रहते हैं, तो अभी थोड़ा यूज्ड टू इट हो गया है सारे तो। नाइस नाइस, हाँ नाइस नाइस, चलो चलो, बट या सेंट में एक राउंड भी टी साइड को देना जब नहीं देना चाहिए, तो जब ऐसे क्लच करते हो मोर कॉन्फिडेंट ऑन द डिफेंडिंग साइड।
स्पेशली क्योंकि इसके पहले एवरी सिंगल राउंड आप लोग बस सारे निकल रहे थे, डब्ल्यू मार रहे थे, रॉसी कुछ भी वन टैप मार रहा था, हेल रेंजर एक साइड पे डब्ल्यू मार रहे थे, लाइक पूरी टीम बस डब्ल्यू 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 रिटर्न ऑफ द ब्रीच आई वाज द बेस्ट वे फॉर मी टू से इट एंड Return of the breach. on the map Yeah, I on mean, the map was it. yeah, just So breach just it looked gives you nice. gives your jet more confidence to just go keep killing. That's all. और उधर Talking lightning about breach fast तो अपना HSB. sentinel है पर खेलते ही duelist है ना. Neon incoming or what? No, No way, दे दो. no way. I don't think so. नो वे नहीं नहीं नहीं. नियॉन HSB नियॉन से आप ना क्या हो पाए. आप बताओ मुझे. Will you guys give me a neon finally? सबसे भीख मांग रहा हूँ मैं literally at this point कि ये हफ्ते एक neon दे दो. क्या exploit से दिखने को I'm मिलेगा? sorry, Sai, we don't give out trash. Wait, what? I'm saying we don't give out trash. Trash agent and neon. Wait, so you wait. Okay, interesting question. तो आपको लगता है neon is trash? मतलब हाँ काफी वो ज्यादा. बेसिकली योरू की तरह ही है यार, Ah, इतना कोई No, ओपी एजेंट नहीं है कि मेरे को अलग लगता है. I think neon is very good on अलग ascent लग and split. Yeah, these two maps. बाकी सारे मैप में इतना स्ट्रांग नहीं है पर ascent and split मुझे तो उसकी actually? कैपेबिलिटी लगी सही है. जिसको शॉक करके अच्छा है ना हमारे पुश ना करता है। अगेंस्ट एक दफा अभी रिसेंट स्क्रिम में एक प्लेयर था, आई थिंक ही वाज यूजिंग ब्रीज ऑन आई मीन यूजिंग नियॉन ऑन ब्रीज, तो वो काफी अच्छा हाँ. यूज कर रहा था उसको. तो आई थिंक Yeah. ब्रीज में यूजफुल है बट आई डोंट लाइक इट. मतलब इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ काउंटर ऑफ अ जेट, क्योंकि हमारे पास जेट स्ट्रांग है, तो आई डोंट थिंक कि जेट को रिप्लेस कर सकते हैं नियॉन से, एटलीस्ट हमारे रीजन में. तो No, agreed. You can't replace the 100%. I jet, don't but think. yeah, but feel like neon's wall can be used as to go ahead of the choke points. जैसे कि ascent की A main, ascent की B main. तो ये जो हाँ सारे एस्ट्रा जो है ना, जो असेंट को पूरा मुश्किल बना रखे है टी साइड को एस्ट्रा की वजह से. दिस वॉल विल हाँ हेल्प यू गेट इनटू साइड्स. दैट्स ऑल आई ये फील तो लाइक है. दैट्स वेरी स्ट्रांग. Agreed. Personally, like split, I agree with. I think bind and fracture for me is where I really want to see the neon come to. But I guess not. I think the Rays is just dominating the meta. And it's interesting getting a different opinion, you know. So it's nice seeing that teams are approaching it different ways. Because even internationally, काफी अलग-अलग perspective है. थोड़े teams just don't use her at all. थोड़े teams हर map पे run करती है. Team Liquid अभी Haven पे भी run कर रही है. So it's nice seeing बट डोंट that वॉच टीम difference in लिक्विड, meta. Huh? दे ब्रिंग आउट द मोस्ट मतलब अजीब से वेरी कॉम्स हैं उनके, तो उनको अनयूजुअल ना ही प्ले देखो. स्टाइल. या वेरी अनयूजुअल बहुत प्ले स्टाइल. कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशन यूज बाइंड करते में हैं। यू कांट एक लाइक वाइपर को लेकर एग्जैक्टली खेल रहे कॉपी वो देम. लोग. Yeah, बाइंड में एक definitely. वाइपर को लेकर खेल रहे थे, इसलिए हाँ. हार गए. शीज में बिना जेट के खेल रहे हैं, बताओ। XT. Yeah, I agree though. Like Team Liquid के compositions copy करना impossible है. They play for themselves, you know. उनके team, उनके players के हिसाब से तो वो तो नहीं हो सकता है. But fair enough. Enough of that. Let's get to our next clip. I believe. Unfortunately फिर से shooter का ही है. काफी मार रहे थे आप ये weekend की clips हम use कर सकते थे. तो let's have a look at this clip once again. And this is the retake. Oh, actually, I know what question I want to ask around this. So, those systematic playstyle हम बात कर रहे थे HSB in the first idea. Like मैं notice कर रहा था आपके breeze attack पे आप लोग काफी slow खेल रहे थे initially, and then once you reach that match point, just burst. So I wanted to know कि why it was only after the match point and why not before that? Like what was the discussion there? तो हमारी टीम में थोड़ा सा मतलब इनपुट सीन बहुत ज्यादा है, एज इन वी गिव आउट इनपुट्स. और गॉड पार्टिकल्स के अगेंस्ट आई थिंक हम लोगों ने, आई थिंक दिस वाज आवर थर्ड मैचअप, तो वी हैड अ फेयर बिट ऑफ आइडिया गोइंग इनटू द मैच. वी न्यू हाउ टू प्ले अगेंस्ट देम. तो गॉड पार्टिकल्स आई थिंक इंडिया में, आई थिंक गॉड पार्टिकल्स हैज द मोस्ट यूनिक प्ले स्टाइल. दे प्ले वेरी स्लो कंपैरेटिवली टू अदर टीम्स. तो आई थिंक दिस कॉल वाज ओनली बिकॉज वी कुड हैव caught them off guard. Like हम अचानक से एक्सप्लोड अगर करते साइड में तो वुड हैव कॉट देम ऑफ गार्ड. तो बस इसलिए हो गया. मेरे लिए क्वाइट सरप्राइजिंग था क्योंकि आप लोग पहले नहीं करे क्योंकि व्हेन आई थिंक बैक टू VCC 1 लाइक एक्सप्लॉइट वाज दैट अग्रेसिव टीम, यू नो, कहीं से भी घुस जाते थे बट जब भी घुसते थे एकदम फ्लॉलेस रहता था, हर एंगल कवर्ड रहता था. तो शूटर, आई वांट टू आस्क यू नाउ लाइक दैट पर्टिकुलर राउंड यू हैड टू क्लच इट आउट. तो डू यू फील लाइक यू नो आप सिस्टमैटिक बनते बनते थोड़ा थोड़ा सा शायद वो पुराना वो प्ले स्टाइल खो गया है या यहाँ यू आर वहाँ स्टिल होना ट्राइंग टू पड़ता फाइंड द है, बैलेंस? थोड़े थोड़े सिनेरियोज में होना पड़ता है वैसा. बीसीसी वन जैसी खेलते थे पब्लिक, उसमें यहाँ वहाँ निकल जाते हैं हम लोग राहों में. तो
और तो वहाँ पे आसान you कौन सा have to लगता like है? तो get off इवन the system sometimes. तो साय कभी कभार you have आई to get एग्री। off the system. अगर आपको feel आ रहा है tournament match में you can make a play work तो आप करो. That's our mentality. But हाँ या तो that's just our mentality. It doesn't mean have to be other teams mentality. मगर हर team का अपना play style होता है. They have their own thing to do. तो हम हमारा है थोड़ा सा ऐसा कि if we think something is gonna work off the system, we make it happen in और tournaments अगर गलती भी especially. जाती है तो हम बोलते हैं खैर हो गई, नेक्स्ट राउंड फिर से देख लेंगे, तो नाइस। इट्स ऑल गुड। हाँ मेरे लिए वही सरप्राइजिंग था क्योंकि आई वाज एग्जैक्टली एक्सपेक्टिंग दैट कि you guys would just be like yeah screw it just W दबाओ घुसो इनको मारो। VLT also found a lot of success doing exactly that against God P on that map so जब मैच पॉइंट पे होने लगा बोला हाँ अब this is where I can see that old exploit coming in and looked really cool but I want to ask you guys Skillz you faced off Yeah. against those SEA teams against those Mm. Korean teams who are splendid at doing exactly this you know like Yeah. pressing W at the right moment and doing it Mm. tactically at the same time. So, how do you prepare for something like this? Is there any preparation? There's only one way like you can prepare for this. You get ready for the utilities, you position yourself and you kill them when they come. But यही तो होता है कि मार नहीं पाते हम लोग उनको. यही दिक्कत है. You can't like do anything against like these plays. You will be expecting these plays, but your positioning matters at that time and you need to step up and kill them at that time. You need to punish those aggression. थोड़ा तो रुक जाओ, ऐसे तो नहीं आ सकते हम लोग के सामने. ऐसे करना पड़ेगा वरना आते रहते हैं. Fair. Lightning fast. What about you? What do you think? Like, is there any other way to play around it? Like maybe from your experience in LCQ? दो दो डिफरेंस है एसीए और कोरियन टीम्स के सामने। तो एसीए टीम्स ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द टीम्स आर लाइक, तो दे डोंट गिव रिस्पेक्ट टू द से साउथ एशियन टीम्स बोल सकते हो। तो ऐसा दे कीप ऑन पिकिंग यू, दे कीप ऑन डूइंग दोस एग्रेसिव प्लेज। इट्स लाइक तुम्हें स्टार्टिंग में इफ यू कैन नॉट अर्न द रिस्पेक्ट, दे विल कीप ऑन लाइक वाइट पिकिंग यू एवरीवेयर और समथिंग लाइक दैट। वो लोग गेम पे फाइट कर गेम चालू करते रहेंगे। देन वही है कि तुम अगर उनको सामने से नहीं मारोगे, वो लोग भी ऐसा बंद नहीं करेंगे करना ये सब, ठीक है। तो again Korean teams are more like what we experience is the Korean teams ऐसा है कि they like starting से ही give respect to They're the very teams. methodical. Yeah, they're So very methodical. So for us, like, I don't know, हम बोल नहीं सकते कि we rely on the teamwork more than individual plays, except Rossi का individual plays। तो वही है कि हम लोग अगर टीम वर्क में खेल रहे, सो इफ टीम अगेंस्ट अस इज मेथोडिकल, तो वी मे बी वी कैन रीड देम बेटर देन जस्ट टेकिंग रॉ एम डुएल्स। दैट्स लाइक मोर फेवरेबल फॉर अस। Yeah, वही है। definitely वही understandable. है Even like Rossi's plays. Go एसीए on, के skills. सामने भी Sorry. वही है कि वही बोल रहा था मैं कि if you don't punish them, like even if you default around the map, even if they're alone, they will pick those angles and they'll just clear the angles. वो लोग clear कर देंगे and your default's gone to waste. So you need to get them, get that fear in them. Like you can't peek alone. You can't peek. You're alone. Just go play in your side. Peek नहीं कर सकते तुम लोग ऐसा. तो ऐसा करना पड़ेगा. वरना nothing's going to matter. Yeah, definitely. Like I get that POV, you know, because we've seen that. Yeah, Like for example, the difference between a Paper X as compared to a Vision Strikers, they might be yeah, just as good, but the playstyle is just miles apart. And hey, maybe yeah. one day we'll have people talking about the South Asian playstyle. Like one day. I can only dream. But for now, I believe that is the end of our clips. ऐसा होता The है ऐसा है वैसे। क्या होता है? Our coach, हमारा coach जो है, he watches global, he watches VLT, he watches our demos, he watches Enigma's demos, और कहता है कि he's learned quite a lot from the South Asian scene. So it makes me Hey, let's happy go. that Mhm. we have a positive impact on the Valorant map. तो I think it makes me happy। और जो South East Asian Valorant की बात है, तो I don't know how much ping do you guys get in C servers, but for us it's like 90 to 100 and we get out aimed a lot by them। और हमें इस चीज का इशू बहुत होता है प्रैक्टिस में कि they don't give respect then they don't let us Yeah, run our defaults। They like will make solo pushes, individual pushes, and that pisses me a lot, pisses me off a lot। और मतलब it makes me think कि यार अगला बंदा respect नहीं दे रहा है इन गेम आपको। and
आई थिंक अगर हमारी साउथ एशियन टीम्स आती हैं इनके अगेंस्ट लैन पे तो आई वुड वांट अस टू विन अगेंस्ट देम, मतलब मैं तो चाहता हूँ हमारी रीजन टॉप करे। I love that. Like, yes, exactly, right? Like, region, Yeah, a ping VCC matters a cut, lot like, in this game. टू मच। Valorant में CS:GO ping में इतना बहुत पता नहीं it's चलता good, था, man. लेकिन Valorant में बहुत। Yeah, especially in the top tier, ना, like, सबसे best of the best हम्म players के against खेल हाँ, रहे हो तो छोटी सी छोटी बात बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाती है. I can imagine that. But hey, सिर्फ एक हफ्ता दूर है going into the APAC challengers, so some of you at least will get a chance to go at those SEA teams, you know, take a crack at them, you know, थोड़ा सा शायद आपका frustration उधर निकाल के उन्हें एक गलत चमाट दे दो तो अगली बार सोचेंगे 2 बार before picking a South Asian team. But for now, Yeah. I या think I definitely get that perspective. But I'll tell you what, enough of the game. I mean, not Valorant game itself. I mean, enough of the in-game. I have some interesting questions for you guys lined up. So, उसकी तरफ बढ़ते हैं, and we'll see how many of you actually know about the lore, about the music, and जो भी अलग-अलग चीजें besides the aim and the actual meta and all of that. So, let's see the first question. I'm very Ooh. bad at this. So okay, so for reference, KO is from the future. In his future, there is war between रेना radiants and non-radiants. अरे ये आप मेरे को पता है आपने कल देखा है, ठीक है? नहीं, लेकिन But मैंने देख के नहीं बता रहा, आई नो oh, okay. पर मेरे को आंसर। यहाँ पता है मेरे मुझे को तो भी किलजॉय लग रही थी। कौन है. नो नो ये Killjoy is रीना actually ही है. human, so it's not Pretty sure radiant. about Yes. that. She's not radiant. Yes. Brim is also human. Reyna has superpowers and Jet has superpowers, but Jet is younger than Reyna, so my guess is it should be Reyna. I'll give you a Nice valid reason logic. why Reyna is it also is Reina. I'll give you okay. a Oh, okay. valid reason why it is Reina. So जब KO आया था तो मैं वो ट्रेलर को 2-3 बार देखा था और उस ट्रेलर में KO's मेमोरी में ये रेना आती है एक Yes. तो वो उसके लिए मैं रीना बोल रहा हूँ. तो KO और रीना का कुछ Oh. तो हाँ रिलेशनशिप है. हाँ मगर हाँ मुझे हाँ. लाइक मैंने रेना इसलिए आंसर किया है क्योंकि रेना इज लाइक काफी कल बोल्ड देखा HSB ने इसलिए. वुमनली टाइप। नहीं नहीं नहीं, नो चीटिंग हाँ नो हाँ, चीटिंग। देखा है मैंने। इतना ज्यादा पूरा नहीं देखा मगर एक आइडिया था मुझे, थोड़ा सा देखा था मैंने। तो आई थिंक इट शुड बी रेना क्योंकि रेना का थोड़ा बोल्ड कैरेक्टर है इन टर्म्स ऑफ जेट। Yeah. जेट थोड़ी सी गर्ली है वो, और रेना थोड़ी सी बॉसी है, तो शुड बी रेना। Yeah, that's perfect logic actually. Like there are two ways of answering that question. जो जैसे Skillz ने बोला, in game even in voice lines अगर आप KO रेना साथ में खेलते हो तो KO वो रेना को शेड देता है, like I don't like her, उसको वो पसंद नहीं है in general. And ओह that Okay. logic is also absolutely perfect क्योंकि Killjoy Brimstone humans है तो वो non radiant side पे ही लड़े थे automatically, and रेना like वो खून के लिए ही लड़ती है तो in a war it makes sense she would be the queen, you know. So I love this. Hey, यूजुअली जब पीपल आते हैं इंकी विंकी पोंकी करके छोड़ देते हैं या उनको ऑलरेडी पता रहता है, आपके मैनेजर को सब कुछ पता था काउशी को. हमारे मैनेजर को। But हाँ, टीम एक्सप्लॉइट के मैनेजर, आई एम नॉट श्योर हाउ दैट वर्क्स आउट, नो बट नो, काउशी ही को इज सब आवर कुछ पता मैनेजर। था. हाँ, so yeah, आपके मैनेजर को सब कुछ पता था, ये to the T, like as much as I know, so it was lovely. हाँ, तो yeah, either extreme रहते हैं, तो I like the logic aspect a lot. But hey, let's go over to the next question. थोड़ा और मुश्किल होने वाला है because there's going to be more of different aspects. So this chamber has, oh wait, slight grammarish हो गया, को बोल दो, Yeah. sorry, द को बोल जाओ. Chamber has a tattoo, उसके बॉडी पे काफी टैटू है, but उसमें से एक टैटू उसके Uh, अल्ट में बदलता है, the Tornefus. तो वो टैटू कहाँ है? should forehead. be four, ये four end है ना, सोल्ड इट। ये हाँ four end वही है है ना, 4 end. हाँ four end. हाँ, आई लाइटनिंग थिंक फास्ट चेंबर खेल रहे हो क्या बहुत रिसेंटली? मैं भी बहुत आई चेंबर थिंक खेला हूँ उसके पर Four end. या सर पे ऑप्शंस टैटू है दिखाओ, एक फिर तो, से ऑप्शंस दिखाओ. यहाँ कहीं है। कैन वी सी इट अगेन? हाँ, यस, यहाँ लेट्स आता है आई शायद थिंक forehead. फोरहेड है, आई थिंक Forehead है। अच्छा four head है ये That's बेंचो forehead, में it's four. not forearm. अच्छा it's hand. Should हैंड be ही है. hand. एक फोरहेड पे टैटू और एक यहाँ पे टैटू है उसके, Forehead पे तो टैटू है शायद। हाँ पर जब वो अल्ट करता है वो हाथ से आए, निकालता है ना ऐसा. हाथ से निकलता है, तो शुड बी Hand हैंड। hand 100%. हाँ, Yeah. या hand. पक्का लॉक कर दूं? लॉक Yeah. लॉक कर दिया है. ऑलराइट, लेट्स गो, लेट्स कर सी दो। प्रोडक्शन, व्हाट इज द आंसर? बाइसेप्स आया ना, एक्चुअली बहुत पहला गुस्सा होऊंगा इंस्टिंक्ट मैं. करेक्ट था, शायद हमें तो फोरहेड। देयर वी गो, शिट, इट इज फोरहेड, वो Forehead? सर से भाई। निकालता है. हाँ, तो यहाँ वो पे भी हेड से टैटू कैसे है। स्पेसिफिकली निकलता लेफ्ट है? हैंड साइड पे एक वो टैटू हाथ है, से निकलता है ना ऐसा करके. दो क्योंकि हम वो लोग सर से फर्स्ट निकाल पर्सन के उसके मोड में हाथ है में ना. लेता है. सॉरी, डैम. हम लोग या फर्स्ट योर नहीं पर्सन मोड फर्स्ट में उसके रहते हैं ना इंस्टिंक्ट इसलिए वाज पता करेक्ट.
No, his तो instinct was उसका forearm. It was not forehead. Yeah. नहीं, उसके It's यहाँ पे good. एक टैटू है स्कल के हाँ पास, एग्जैक्टली तो लेफ्ट हैंड साइड पे उसके सर पे एक टैटू है एंड उधर से वो हाँ निकालता है. बट Right. Yeah, I इट्स ओके, also just नाइस found ट्राई. out today. मैं थोड़ा research कर रहा था about what questions to ask. I was like, oh, उसके Mhm. सर से निकालता है. मेरे को भी यही लगता था lightning fast कि वो ऐसे his ult comes out like this and it looks like the Reyna Yeah. dismiss. So Yeah. it was something cool to learn for me as well. But hey, with that, let's head on over to the next question and see what we've got. I think ये गाने के बारे में या voice actor के बारे में, if I'm not mistaken. And मैं always like मैं League of Legends background से हूँ तो थोड़ा उसका टच लेके आने की कोशिश करता हूँ. So yeah, which अभी recently Neon निकली है, उसके साथ साथ एक चैंपियन निकला लीग Uh, में, दोनों का एक ही वॉइस एक्टर है. So again, this is a आई थिंक इट्स question that is लुलू, answerable by logic. If you try. आई थिंक इट्स लुलू. I have no clue. League I of Legends think एक बार भी नहीं Jinx है खेला है वो. सेम, मैंने. आई हैव नो आइडिया, I think Jinx Jinx है कैसे? वो. कुछ पता ही नहीं है. भाई. ठीक है, मुझे भी shoot ये doesn't जिंक्स shoot लीग ऑफ इसलिए doesn't बोल लेजेंड्स listen, रहा he है has no क्योंकि idea. ये जिंक्स का आर्केन देख पता के है, आया है. आर्कन, नहीं 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 मेरे आर्कन द्वारा. को हाँ मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दोनों का पता नहीं भाई वॉइस एक्टर सेम है. हाँ. Wait, हसीब told Lulu ना? क्यों? या हसीब पता हसीब है? भी ऐसी बोल रहा है, पता सुन के नहीं, देखा. मैंने कहीं पे ना मुझे याद आ रहा है ट्विटर पे, आई सीन नियॉन हैज अ लिंक विद सम लुलू, पता नहीं, तो आई एम गोइंग विद लुलू, क्योंकि मैंने ट्विटर पे Let's कहीं go with लुलू को Lulu. देखा है. यार लेट्स गो जिंक्स विद की लुलू लुलू वॉइस देन. और जेरी शायद. नियॉन की वॉइस जिंक्स लेकिन है, आई थिंक मैच जिंक्स. ही आई नहीं थिंक कर नहीं रहा नहीं नहीं, यार. हाँ, आई थिंक जिंक्स, लेट्स गो विद जिंक्स है जेरी. व्हाट ट्विटर सेड, लेट्स गो विद जिंक्स बिकॉज़ इसने वो देखा है ना आर्केन, तो लेट्स गो विद जिंक्स. अरे मैं भी आर्कन uh, देखा है नहीं, आर्केन जिंक्स है तो इसलिए जेरी. तो बोल रहा हूँ. आर्केन देखा सेकंड है, या फोर्थ तो में से क्या कोई है. जिंक्स है. बस तो एक काम मुझे करते Okay, हैं I'll फिर, I'll कर लेट्स make गो दे. it विद जिंक्स. easier for you guys. Jinx is ओके, American sort of voice, and या ब्रो Neon जिंक्स is नहीं है. Filipino. जिंक्स नहीं है. जिंक्स नहीं है तो फिर क्या या है फिर? जिंक्स नहीं है, लेट्स गो हाँ. विद द वन स्किल्स इज ठीक. गोइंग विद. नहीं लुलू. स्किल्स मैं तुम क्या तो बोलते हो? हसीब को ज्वाइन कर रहा था. लुलू. यार एक दूसरे को लुलू, मेरे को follow आइडिया ही कर नहीं. रहे हो. मुझे भी आइडिया नहीं है, तो आई थिंक लेट्स गो विद It's जरीन. मुझे भी between one आइडिया and शुरू नहीं two. किया था. है. 3 and 4 जेरी नहीं है. मैं जेरी 50-50 लॉक कर दिया देता जाए. आप लोग को. चलो Cool Zeri क्या जरी लॉक Zeri. कर दिया Let's जाए. go with Zeri. Charity. लेट्स गो विद लेट्स जरी. गो जेरी, हम चारों एग्री करते हैं. Zeri पक्का. या Yeah, let's go. पक्का Let's go. मटका है ये. Let's या see लेट्स. लेट्स गो. the answer production and बॉयज see बॉयज what it जीतना is. है, ओके. ओ नहीं हाय नहीं ये गलत लुलू. है. नहीं ये अबे गलत है. Zeri यार. आंसर है. hold on ये गलत है. Hey, production से slight mistake. That's okay. लीग के बारे में सिर्फ मेरे को पता है. So fair enough. It is Zeri. You guys got it Zeri. right. Okay. Okay. लुलू की आवाज और किलजॉय की आवाज एक है. So that's why you might have ओ seen that Twitter connection somewhere Oh. HSB. So the voice ओ actor of Killjoy is the same as that of Lulu. But hey, 3 question हो गए. One final question. I think this is the easiest one of them all. So let's have it real quick and see what we've got. If I remember correctly. हाँ, ये भी कल था. So yeah, let's see our fourth question. And I also want to ask you, like, besides Valorant, of course, how do you guys use your time? कोई और what hobbies do you have? Skills mentioned कर रहे थे earlier. You like drives. Is that something you go on regularly? Yeah, I mean, मेरे को बहुत पसंद है लाइक टूर्नामेंट गेम से पहले भी कि मैं एक ड्राइव पे जाऊँ पर नहीं होता है. पर बहुत पसंद है जब बाहर जाना, सिर्फ हवा खाना, बाहर की हवा. इधर एसी का हवा खा खा के बहुत पक गया हूँ. बस बाहर जाके हवा खाना बहुत पसंद है. वैसे हॉबीज तो देखे जाए तो ऑब्वियसली ईटिंग अ लॉट विदाउट अ डाउट. स्किल्स. और हाँ. Why are you called और DJ Skills in chat? That's I wanted to ask that, क्योंकि हॉबी है क्या डीजे हो वाकई में? नहीं मतलब वो What's एक the background? सुक्की का व्लॉग था. मोहित हाँ. इजरानी जो भी जानते हैं, उसका व्लॉग्स Oh. था. सो उसका एक व्लॉग में मैं गाना गा रहा था. एंड ही इज लाइक व्हाट्स अप स्किल्स. आई एम लाइक डीजे स्किल्स हियर, तो टेल मी, कॉल मी डीजे स्किल्स. सो उधर से चालू हो गया बस. Oh. सो उधर से डीजे स्किल्स सब हाइप हाइप कर दिया उसको और उधर से चालू हो गया था. तो वैसे देखे जाए तो हॉबीज खाना खाना, बस खेलना और दोस्तों के साथ बात करना. अभी तक तो यही चालू है. एंड एनीमे Which ऑफ कोर्स. cuisine? Any cuisine that you're particularly liking right now? अभी के लिए? अभी के लिए मेरे को अगर डिलीशियस है तो कुछ भी क्यूजिन में खा लूंगा. ऐसा नहीं दिखता क्यूजिन. जो नहीं भी but डिलीशियस suppose है तो अभी खा का अभी लूंगा. आपको ऑर्डर करना पड़ा तो what is the हाँ. comfort food for you? ओह माय गॉड, इट्स अ हेडेक राइट नाउ. जब भी ऑर्डर करना पड़ता है, क्या ऑर्डर करूँ ही समझ में नहीं आता. एवरीथिंग सब कुछ तो खा लिया मैंने, क्या ऑर्डर करूँ. तो बहुत Fair, वो fair. इरिटेटिंग है. बट आई विल जस्ट गो फॉर पिज्जा और बर्गर. Nice. दोनों में से एक. Lightning fast. What about you?
मैं हाँ आई मीन चिलिंग विद फ्रेंड्स इन डिस्कॉर्ड, वो करता रहता हूँ। अगर मैं नहीं खेल रहा हूँ तो बहुत शोर डिस्कॉर्ड में मचाता बैठा है। रहता हूँ। डिस्कॉर्ड में बैठा रहता हूँ, फिर दोस्त लोग के साथ खेलता ही रहता हूँ। वही दो काम है, खाना पीना। ऐसे बाहर घूमने जाना तो ठीक है, जब स्किल्स ड्राइव में जाएगा हम सब साथ में ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वो ठीक वही है, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस में वही करता रहता, दोस्त लोग के साथ डिस्कॉर्ड में बैठा रहता हूँ। या And we had to do a deep dive into you, of course, Anthem के लिए. हम्म, तो मेरे को vague idea है, but आप थोड़ा और detail में बताइए, like what is besides Valorant, what do you like to do? ओके सो बिसाइड्स वैलोरेंट मेरी हॉबी है, मैं जिम कभी स्किप नहीं करता। प्रैक्टिस हो, कुछ भी हो, यूनिवर्सिटी हो, सुबह शाम दोपहर में प्रैक्टिस हो, रात में मैं जिम जाऊंगा जितना भी थका हुआ हूँ या सोया ना हो। तो एक हॉबी ये है। बाकी बिसाइड्स वैलोरेंट आई डोंट सिट ऑन माय पीसी। मुझे अच्छा नहीं लगता पीसी पे बैठना, एंड आई थिंक इट गेट्स स्ट्रेसफुल। ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स रिलेट कर पा रहे होंगे, एंड समटाइम्स यू हैव टू गिव सम टाइम टू योरसेल्फ एज वेल। तो मैं मतलब ऐसे ही मेरा ड्राइव्स वगैरह का सीन बन जाता है। आई गो आउट ऑन लॉन्ग ड्राइव्स एंड आई गो आउट सिट विद कंटेंट फ्रेंड्स, मैन तो है। मोस्टली यही। What the fuck, bro? Hi, Miokin. Ah, सांस लेने की आवाज आ रहा है। classic Miokin. Miokin के reels सबसे best होते हैं. Like honestly, Miokin के reels और किसी से बेहतर नहीं होते. But yeah, shooter, you tell me. Besides Valorant, क्या enjoy करते हैं आप? Like कहाँ पे आपका time pass होता है? हॉबी तो कोई ऐसा है नहीं। यूनिवर्सिटी होती है, फिर यूनिवर्सिटी से आके गेमिंग होती है, फिर रात को हैंग आउट करता हूँ दोस्तों के साथ। तो यही चल रहा होता है लाइफ में, हर दिन रिपीट पे। तो कोई हॉबी का टाइम नहीं मिलता। बाकी शो वो देख लेता हूँ यहाँ आने में। हम पार्टी करते हैं जब Ooh. हमारा लैंड टूर्नामेंट खत्म होता है, उसके बाद हमारी पार्टी होती है। हाँ मैंने देखा है आपकी स्टोरी पे, आप लेट पहुंचो हर बार, ये भी पता है. बट खाना मस्त लगता है, जब भी आप लोग की पार्टी दिखती है ना, एकदम लाइक साथ में बैठते हो एक बड़ी थाली में, लाइक सब्जी सब्जी जो भी है पड़ी हुई रहती है, साथ में जो खाते हो, डेफिनेटली इसलिए नहीं लैंड तो चाहिए इंडियन होपफुली. इंडियन फूड और पाकिस्तानी फूड जो हम कराची वाला हमारा खाना है, इट्स वेरी सिमिलर। मतलब इतना डिफरेंस या नहीं है कोई खास। you'll see the same biryani you guys have there, you'll see everything the हाँ. same, almost the same. हम्म, कुछ यहाँ पे सिग्नेचर डिशेस होंगी, कुछ वहाँ होंगी, मगर इट्स लाइक 80-90% are the same. तो इतना डिफरेंस खाने वाने में है नहीं, मगर बहुत अच्छा खाना है यहाँ कभी, कराची कभी। मैं वीडियोस देखता रहता हूँ फेसबुक पे, एंड एक पर्टिकुलर व्लॉगर है जो मेरा लाइक फेवरेट है, वो अभी अभी पाकिस्तान जाके आया है, वो सब कुछ दिखाया है, एंड डैम इट लुक्स गुड मैन. स्पेशली वो गया था ईद के समय पे, उधर कचौरी दिखा रहा था, समोसे दिखा रहा था, पकोड़े दिखा रहा था, एग्जैक्ट सेम ही लग रहा था इंडिया से, बट स्टिल लाइक विद हाँ दैट बिल्कुल सेम ही एंटायर होता है। वो जो माहौल रहता है. नहीं, मैं भी इंडियन ब्लॉगर्स को देखता हूँ ना, तो बस ये है कि यहाँ पे वड़ा पाव ये सब चीजें नहीं मिलती, मगर हाँ. बाकी सब सिमिलर है काफी। और मेरा है मतलब एक के ट्राई करना है वड़ा पाव। थोड़ा सा फूडी भी हूँ मैं, आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स, तो आई ट्राई समडे। फिंगर्स क्रॉस जल्दी लैंड हो जाए तो ट्राई कर ले. बट अबाउट ट्राइंग, लेट्स हैव अ क्रैक एट दैट फोर्थ क्वेश्चन. फाइनल क्वेश्चन है ये हमारा, तो होप करूंगा कि सबको सही जवाब मिल जाए, एंड let's say take a look at it. Oh yeah, so Astra's nickname for Phoenix, I'll give you a clue before we हाँ, start itself. She calls Cypher Morocco because he's from Morocco, so she calls everyone by their, usually by the name of the country they're from, or the फिनिक्स name इज of the फ्रॉम place यूके, they're then from. सो शुड London, बी लंदन। London, लंदन। yeah. Easy. लंदन। That's a big clue I'm just what you saying I just wouldn't gave us make it right that now. obvious. हाँ यू मैं जस्ट इतना गिव अस भी द बिगेस्ट क्लू। like अच्छा इंसान नहीं हूँ. Oh my god. हमने कभी ऐसा बोला ही नहीं आप बुरे इंसान हो। नहीं मैं बोल रहा नीरिया हूँ मैं किधर पूरा से है? इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ. इतना ऑब्वियस नहीं बनाता आप लोग के लिए, बट इतना शायद I'm ऑब्वियस नहीं telling बना this to रहे। put you in a twist, you never लेकिन know. ये अरिज़ोना तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिनिक्स का कोई कनेक्शन नहीं है जंगल से। और लंदन शुड बी लंदन, या बेबीलोन हो सकता है, इन दोनों में से एक होगा। व्हाट्स योर वाइल्ड गेस बॉयज? एरिज़ोना लंदन या तो नहीं है। सुमेरिया। सुमेरिया लंदन किधर का है एक्चुअली? पता नहीं भाई Sumeria मेरे is को। one of सुमे the oldest civilizations. नहीं One of the नहीं, oldest. हाँ, फिनिक्स वो इज तो लाइक अ नहीं न्यू है। बॉय, तो फिनिक्स तो मॉडर्न बॉय है थोड़ा। तो आई थिंक शुड बी Babylon भी बहुत बेबीलोन और पुरानी लंदन। city है. Arizona is like a state in the लंदन United होना States of America. चाहिए। Phoenix या सो एक city है उधर Arizona में, लेकिन वो and तो London उस of पे course UK फेमस है ना, में. फॉरेस्ट पे, तो डजंट मेक एनी लिंक विद फिनिक्स, तो Yeah, थोड़ा। बट ये भी है कि let's go. बहुत
बहुत एस्ट्रा जंगली खेल एरिया चुका है। हूँ, कभी लंदन बोलते हुए नहीं सुना भाई मैं एस्ट्रा को। क्योंकि फिनिक्स नहीं रहती तो ना कभी एस्ट्रा के हाँ, फिनिक्स के साथ साथ टीम खेला में। है क्या? कोई मुश्किल सा वर्ड बोलती है, हाँ या हाँ, तो बेबीलोन है या सुमेरिया है। आजकल वो भी फिनिक्स बात कौन है। सुमेरिया उड़ा रहा नहीं है होगा, उधर? इतनी पुरानी सिविलाइजेशन से तो नहीं लगता, मतलब कोई लिंक नहीं बन रहा ना, व्हाई वुड शी कॉल हर विद अ सिटी नेम दैट हैज नो लिंक विद हिम। तो फिर बेबीलोन कर दो लॉक। है ना, लॉक कर देते हैं, क्योंकि लंदन इतना आसान होगा नहीं, तो बेबीलोन कर हो देते हैं, सकता है ऐसे, ये कंफ्यूज कर रहा है हमको लग रहा है। है ना। माइंड गेम्स खेल रहा है ये। आए एक ही बार खेलने को मिलता है तो क्यों नहीं खेल। बट ओके लेट्स गो। आई थिंक एक्सपर्ट की तरफ से नंबर 3 लॉक हो रहा है। जी व्हाट अबाउट यू गाइस? ओके। स्किल्स लाइटिंग फास्ट? Or is ये the तो guess going आंसर on? दे दिया ना Oh, कि नहीं नहीं never mind. हम्म, Well, there you go. बेबीलोन। बेबीलोन। It is बेबीलोन। Babylon. I don't बेबीलोन। even know why, बेबीलोन। by the way. किसी को भी नहीं पता है क्यों, क्योंकि बाकी सबको कंट्री नाम से ही बुलाती है, बट सिर्फ फीनिक्स को बेबीलोन बोलती है, तो शायद कोई फ्यूचर स्टोरी रेफरेंस या कुछ। ओह, but we've got Kappa and Mio. They're playing rock. Okay, they have inspired me. Okay. So normally at ए this व्हाट द point, फक my ब्रो। fan message would start. Myokel loss. Biokin, honestly, you should get next time I'll get Myokin on. Content ही content मिलेगा, Nodwin बहुत खुश हो गेट जाएगी। ओनली मियोकन, ऐसा हाँ कंटेंट सिर्फ ही Myokin, कंटेंट 1-to-1 with है। Myokin। ये बहुत मजा आएगा। But yeah, normally at this point we just want to give an ode to the people, at least मेरे लिए जो मुझे help करे इधर आने के लिए। I'm sure आपके बहुत ऐसे supporters भी है, तो for them, and we'll start off again same order. Shooter आप तो आंसर बताइए क्या for था, all आपने the बताया supporters। नहीं। Babylon था, बेबीलोन। Babylon, you were right। बेबीलोन ही था। बेबीलोन था, सही है। तो वही मैं बोल रहा था, लाइक मुझे पता नहीं वो क्यों बेबीलोन बोलती है, कि बाकी सबको कंट्री नाम से ही बोलती है, जैसे I think सोवा Astra को loves Phoenix, so रूस की that's why. बोलती है, यू नो। एस्ट्रा, सॉरी। एस्ट्रा लव्स Astra फिनिक्स। loves Phoenix, I think. इसलिए शायद यार हो लाइक सकता है। वही है ना, ओ, कोई शायद रिलेशन लव हो स्टोरी भी है उनकी यहाँ पे। फैमिली Yeah. में, सम वे मे बी हम्म। देयर, बिकॉज़ शी नोज द पास्ट एंड द फ्यूचर, सो मे बी शी नोज समथिंग अबाउट फिनिक्स वी डोंट नो। शायद वो एक्चुअली यूके से नहीं है। We'll find out. We'll find out. But yeah, a message for the fans real quick before we dip out. And also your expectations, आपके personal individual expectations, ये आने वाला जो weekend है, ये हमारा जो finals weekend है, उसकी तरफ से शूटर आप ही बताइए क्या है? तो फैंस को बोलना चाहूँगा कि सपोर्ट करते रहें, क्योंकि ये चीज़ हमें मोटिवेट रखती है और मेहनत करने की है ना मोटिवेशन दे रही होती है। तो कीप सपोर्टिंग अस। And आपका फॉर द expectation फैंस, ये weekend से? वीकेंड पे एक्सपेक्टेशन हाई है, ज़रूर कुछ करके ही आएंगे Okay, वीकेंड पे। fair. HSB आपकी तरफ से? तो मैसेज टू द फैंस, आई जस्ट वांट टू से कि थैंक यू फॉर द सपोर्ट थ्रू आउट। काफ़ी ज़्यादा फैंस हमारे इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, नेपाल से, थ्रू आउट पूरे साउथ एशिया से। तो आई जस्ट वांट टू थैंक देम फॉर सपोर्टिंग अस, कीप ऑन बिलीविंग ऑन अस। और मतलब बस यही है कि जो भी जाए हमारी रीजन से अच्छी टीम जाए, यू डोंट हैव टू बी टॉक्सिक और एनीथिंग। तो बस यही है। और बाकी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस वीकेंड इज़ वेरी हाई। आई थिंक बहुत हाई क्लास गेम्स होंगे इस वीकेंड पे, क्योंकि आई बीन लाइक ओवरव्यूइंग एवरीथिंग। तो काफ़ी ज़्यादा टीम्स हैं, मेहनत कर रही हैं, एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड, ट्राइंग हार्ड। तो शुड बी लाइक toe to toe matches and it's going to be fun. Will Exploit be number 1? Or will you guys be number 1 rather? Uh, we wanna be number one. We have been working to be number one, and I believe we are gonna be number one. But we'll see on this weekend. And that's all I wanted to hear really. वो अगर विश्वास है तो now it's just down to the actual games to make it happen, and I'm sure you'll try your hardest. But on to you guys, Yes. like on to the team which probably has the most pressure, I would say, to make it happen in terms of number 1. So Skillz, you let me know a message for the fans and then the expectations, and you are muted. Yeah, yeah, no pressure at all. पता नहीं प्रेशर Oh, क्यों है, but yeah, एक यही कि है आप कि डिफेंडिंग like चैंपियंस हो। ठीक है, पर ये दूसरा टूर्नामेंट है, ये नया टूर्नामेंट है, there should not be any pressure first of all. और I want to be like we want to be number one, we want to come first place. There's no reason to think otherwise. कोई reason ही नहीं है। अभी तक ग्रैंड फाइनल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, फोर्थ आएंगे, क्यों सोचूंगा मैं? फर्स्ट ही आऊंगा सोचूंगा।
तो और क्या एंड फैंस के लिए कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस इन Q1 Q2 वाइल्ड कार्ड तीनों में देखने को मिला गाइस ग्लोबल स्पोर्ट्स को वी बीन वर्किंग हार्ड वी हैड सम प्रॉब्लम्स प्लेऑफ्स में भी हाँ प्लेऑफ्स में भी देखने को मिला है। हाँ वो तो वो तो कैसे भी देखने ऑब्वियसली को मिला। प्ले ऑफ तो हर VCC का देखने को मिला है तो सपोर्ट करते रहना हमको वी बीन वर्किंग हार्ड वी बीन ट्राइंग टू फिक्स आवर इश्यूज एंड इट इज फिक्स्ड so you can expect us winning and I want all the fans to keep supporting us and spam G fighting in the chat. Ah, yeah. In Lightning Fast, I want to So really especially hear from you, like, I think ऊपर नीचे वो जो शुरुआत की बात हुई थी, आपने बोला the mentality is there, the GE fighting which Skillz mentioned. So along that mentality, something for the fans. I mean, मैं पहला expectations बोलता हूँ कि expectations is to win to be the best. वो कोई ऐसा मतलब सेकंड एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कि सेकंड आना है कि थर्ड आना है, ऐसा कुछ है ही नहीं, जीतना है बस वो है. एंड फॉर मी इंडिविजुअली आई फील आई नीड टू बी परफॉर्मिंग अ लॉट मोर. तो आई I'm expecting myself to be giving more to the team and to टेंशन मत ले यार क्यों टेंशन ले रहा है बहुत टेंशन ले रहा है it's just that कि वो है अंदर. आई फील लाइक मैं और बहुत कुछ दे सकता हूँ, तो वही देना है, वही देने के लिए आया हूँ टीम में भी, फैंस को भी, सब कुछ को. एंड फॉर द फैंस लाइक इट्स ऑलवेज द सेम. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. आई होप we can make a better documentary this time. this time will be Nice. I late like the the way you put that. documentary. It will be long. I think the vibe I've got from you guys has so far been very chill and competitive at the same time. So I hope that's the exact vibe that the fans take to the chat. And competitive रहे एक दूसरे से, एक दूसरे की team support करते हुए, but also chill at the same time. No toxicity is what we hope for, just love. So thank you for all the love you guys have shared here, and thank you for taking the time. आपने time बनाया हमारे साथ बात करने के लिए, very much appreciated. But for now, all I will do is wish you the best of luck, and like HSB said, the best of the matches in this last weekend of the VCC. So good luck, all of you. Thank Yo, you. thank you Good luck, boys. thank you for having us say Good. yeah. My pleasure. And with that, to you fans as well, big hearts, and we will bid you now adieu. Maybe you can go check out Chambers Tattoo as I go try to learn some French myself. But yeah, bye bye, guys. Take care. Bye bye. See bye you. bye Bye bye. Me are the burning fire and natural born killer. When me pass it to flame, watch out, some might sting ya. So turn it, I am make the bad boy bigger. When they come around, we all run them. Listen to the word and they wire your cuts in the middle. When the flames get higher, put up your gun fingers. Return all of the fire, it's a bad man single. Give a sign. Pull your gun finger trigger. Gun finger trigger. Gun finger trigger.